हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में विल डिस्कस अबाउट मेकअप फॉर बिगनर्स और इसमें मैं मेकअप साथ साथ करूँगी एंड साथ साथ मैं आपको रिकमेंडेशंस भी बताऊंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। Before starting the makeup, it's always advisable that you go for skin care. So first मैं skin care से start कर रही हूँ. So skin care में सबसे पहले मैं cleansing करूँगी and cleansing के लिए मैं wipes यूज़ कर रही हूँ Swiss Beauty के. ये वाइप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें सनस्क्रीन इफेक्ट भी है, सो अलग से सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करेंगे. स्विस ब्यूटी की वाइप्स आई रियली लव दिस वाइप. ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये अल्कोहल फ्री है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये मेकअप भी बहुत आराम से रिमूव करती है, एक्सेस डर्ट ऑयल भी रिमूव कर देती है. अब मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ. सो फॉर टोनर आई एम यूजिंग इन दिस वैली रोज वाटर टोनर. ये टोनर बहुत ही हाइड्रेटिंग है. Now I'll be using Cetaphil moisturizing cream. I just love this cream because ये cream best है for all the skin types, be it natural skin, be it dry skin, be it sensitive. Primer I'm using Inside cosmetic primer and ये primer is good for dry skin आता है, which is very good for oily skin to normal skin and this is good for dry skin. and मैं ये primer वहाँ ही लगाऊंगी जहाँ जहाँ मेरे pores हैं. यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर. ये कंसीलर एग्जैक्ट मेरी स्किन शेड का है एंड इसका प्राइस बिटवीन 170 to 200 है. इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड इसे लगाने के बाद आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा कवर. लगाऊंगी अंडर माई आई, वन डॉट ऑन माई लिड and one here. Now I am blending it and always make sure whenever you blend the concealer you blend it with a very light hand. मेरी स्किन पे फाउंडेशन की नीड नहीं है. विद द हेल्प ऑफ स्विस ब्यूटी कंसीलर ये पूरा कवर हो गया. नाउ आई विल बी यूजिंग क्रीम ब्लशर एंड इट्स बाय द ब्रांड जस्ट हर्ब्स लिप एंड चीक टिंट. सो नाउ आई एम अप्लाइंग क्रीम ब्लश ऑन माई चीक्स. मेरा पर्सनल फेवरेट क्रीम ब्लशेस हैं एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर पाउडर ब्लशेस ऑल्सो. पाउडर ब्लशेस में भी बहुत अच्छे ऑप्शन है. माई फेवरेट इज के ब्यूटी एंड इफ़ यू टॉक अबाउट क्रीम ब्लशेस आई लव जस्ट हर्ब्स एंड लव. In case you don't have any brush set, then you can do the same with the finger also. Done with all the liquid and cream products. So now I'll be setting my face with the Studio Fix MAC powder. This is the packaging of this product. And if you're looking for more affordable options, then you can go for Swiss Beauty, Faces Canada and Maybelline. And I'll be applying this compact powder with the help of Powder Puff. I have got this from Pack. And you can buy this from Flipkart, Amazon and Meesho. वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा affordable range में आपको powder puff मिल जाएंगे. Pack powder very gently below under your eye. And same thing you have to follow for your whole face. On your whole face you have to pat it very gently. Now let's directly move to eyebrow. For eyebrow I'm using Inside eyebrow pencil. It's very affordable. It's under 100 and the best part is in this eyebrow pencil you have spoolie and also you have the very beautiful eyebrow tip. Now let's talk about eye makeup. So for my eye makeup I'm sharing my two best recommendations. So first one is by the brand Mars. So for Mars I'm using this palette Eyes Can Kill and it's super affordable. Its price is $11.99. Let me show you all the shades, the color ranges that are available in this brand. I think this is the best palette. You can create all types of dramatic looks and subtle looks. It has got all the nude, it has got all the neon colors. Beautiful palette. Second palette is by the brand Mattlook. The price is 500. It's super affordable. The best part about this palette is it has got all the beautiful eyeshadow shades. It has got highlighting shade. It has got blush. You don't need to buy a separate product, highlighter, blusher, eyeshadow. It has got all. It is like 3-in-1 pack. Let's start with the eye makeup. So for eye makeup सबसे पहले मैं अपनी eyes को powder कर रही हूँ cream color से, so that मेरी eyes को एक beautiful base मिल जाए and उस पर कोई भी color बहुत अच्छी तरह आ जाए. सो अभी मैंने अपने आईज़ को पाउडर के लिए मैंने ये क्रीम कलर यूज़ किया है. अब मैं इस पर कलर अप्लाई करूँगी. सो सिंगल कलर आपको अप्लाई करना है. सो डेली लुक के लिए, ऑफिस लुक के लिए द बेस्ट कलर दैट यू कैन गो फॉर इज़ दिस ब्राउन शेड. सो आई विल टेक दिस ब्राउन शेड एंड आई विल अप्लाई ऑल ओवर माई आईलिड. Now for my kajal application, I'll be using Chambor kajal. And if I talk about affordable range, so you can go for Sugar, you can go for Mars and Maybelline. Yeah. This is one of my favorite step in eye makeup because I feel
एक डार्क काजल आपकी आई मेकअप लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है. So this is a mandatory step for me. One of my favorite step also. Mascara से आपको जैसे लगता है कि एक false lashes effect आ जाता है. And for mascara, I'm using this Swiss Beauty mascara and this is also very affordable. This is below 400 and ये भी false lashes का effect देता है. मैं इसकी application भी दिखाते हैं. सिवॉन बहुत कंफर्टेबल है एंड ये भी एक्सट्रीम ब्लैक है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप व्हिच इज लिपस्टिक. सो फॉर लिपस्टिक आई एम शोइंग यू माय 2 रिकमेंडेशन. फर्स्ट वन इज इनसाइट लिक्विड लिपस्टिक एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लिपस्टिक. इट हैज़ गॉट ब्यूटीफुल शेड रेंज एंड इट इज़ प्राइस्ड लाइक 105 एंड नाइका पे हमेशा ही सेल चलता है तो ये आपको अंडर 100 मिल जाएगी. एंड सेकेंड, इफ़ यू आर फैन ऑफ क्रीम लिपस्टिक देन आई हैव दिस ब्यूटीफुल रेंज ऑफ Popxo एंड इसमें से आज मैं एक शेड यूज़ कर रही हूँ विच इज़ द न्यूड शेड. एंड लेट मी जस्ट शो यू. दिस इज़ हाउ द क्यूट लिपस्टिक लुक्स लाइक एंड इसमें से 3 शेड्स हैं. एक शेड मेरा ख़त्म हो गया है एंड आई एम लेफ्ट विद दीज 2. आई फील दिस इज़ अ ब्यूटीफुल न्यूड पिंक कलर एंड इट्स लुकिंग सो गुड ऑन मी. So this is the beginner makeup look from my side today. I hope you guys have enjoyed and liked the video. And ये इतना simple makeup है, आप कहीं पे भी carry कर सकते हैं, be it your office, be it you are going out with your friends. So if you enjoyed this video, do let me know in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.